Hello kids, how are you doing today? I hope you are taking good care of yourself. Welcome to Literacy Skill Book from Learn Forward Feather Cap. Let's start with the new alphabets and we'll start from W till Z. We call it Z, we call it Z. तो चलिए हम पढ़ते हैं W. W. This is a big W, capital W, and this is a small w. They both looks like same. दोनों same दिखते हैं. W for well, कुआं. W for water. W for web, जाला, मकड़ी जाला बनाती है ना. And W for watch, घड़ी. ठीक है. और W कैसे बनता है? Two slanting lines के बीच में भी two slanting lines को ज्वाइन करना. इट्स लाइक अ उल्टा एम. एम ये डब्ल्यू है और अगर हम इसको टर्न करेंगे, फ्लिप करेंगे तो ये एम बन जाएगा. चलिए पढ़ते हैं. ड्रॉ लाइन फ्रॉम द लेटर डब्ल्यू टू द पिक्चर दैट बिगिंस विद इट्स साउंड. डब्ल्यू फॉर, जस्ट वेट. डब्ल्यू फॉर बेल? नो. डब्ल्यू फॉर वॉलनट, अखरोट. As W as a wall, W as wood, and W as wizard. Wizard होता है जादूगर. Okay, let's do the next exercise of W. Let's sing a song first. W is for watermelon. W is for watermelon. W is for west. W is for walrus. Walrus is a animal. And let's take some rest. अब थोड़ा आराम करते हैं. तो चलिए W बनाते हैं. पहले मैम ने बताया स्लैंटिंग लाइन. इसको हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे. another slanting line, another slanting line, then join it and then another slanting line. अब हम इसको कवर कर देंगे. इसमें सारी लाइन slanting lines होती हैं and you have to color it also. आपको इसे कलर भी करना है. Color the walnuts. Walnut होते हैं अखरोट. आप सबने खाए होंगे अखरोट. Yes, it is a nut. तो अब आपको इन अखरोटों को, वॉलनट को कौन सा कलर करना है? ब्राउन कलर. वॉलनट ब्राउन कलर के होते हैं. टेल योर मम्मी टू शो यू द वॉलनट. और इन्हें आप करेंगे एज अ होमवर्क. ओके किड्स, लेट्स स्टार्ट द न्यू अल्फाबेट. दिस इज X. X. X is a X mystery. X is a for X-ray. जो डॉक्टर हमारा एक्सरे करता है जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती. So this is a capital X and this is a small x. They both look like same. Draw lines from the letter X to the pictures that begin with its sound. X as a X-ray. X as a X mystery. X as no other word. Okay, because X से word sound से start होने वाले words बहुत limited होते हैं. क्योंकि bear, cloud, fish, rabbit, H इसमें कहीं भी X नहीं आ रहा. So let's do the next exercise. X is for X-ray and X mystery 2. X is a letter as unique as you. X एक नया लेटर है जैसे कि आप हो यूनिक. ओके, तो ये कैसे बनता है? टू स्लांटिंग लाइंस. इसमें ये ऐसे बना रहे हम, बट आपको टू स्लांटिंग लाइंस को कट करने पे हमारा X बनता है. Join the dotted lines very neatly, बच्चे. This way. And you can color it also because you have to color it also. Color the X mystery. Now this is a X mystery which is decorated on Santa. When Santa comes on, when do Santa come? Christmas. Yes. So color the Santa tree green, red, blue. You can use any color of your own choice. आप कोई भी color use कर सकते हैं. Color it. This is your homework. Now let's start with the new alphabet Y. Y is, this is a capital Y and this is a small y. Y is a, we also say Y, Q, but this is just an alphabet. वो होता है WHY. ठीक है? Y is a yak. This is an animal which we found in mountains. Y is a yarn. Yarn होता है धागा. Y is yo-yo. Yo-yo is a game. जो बच्चे टॉय होता है ये और जो बच्चे खेलते हैं. Y is a yam. Yam is a एक तरीके की वेजिटेबल होती है yam.
Draw lines from the letter Y to the picture that begins with its sound. Y as yacht. Yacht is it's like a boat जो कि हम अपने enjoyment के लिए use करते हैं. कहाँ पे? C में. Y is for yoga. I'm sure आप सबके parents yoga करते होंगे. Y as a yellow color. Y as a yogurt. Dahi, mera favorite. So Y as a yacht, Y as yoga, Y as yellow, and Y as yogurt. Okay, let's start the new exercise of Y. Y is for yo-yo. Y is for yo-yo. Y is for yarn. Y is for yarn. Y is for yaks. Y is for yaks that live in the barn. That live in the barn. Now let's make Y. One slanting line, then a small standing line, then standing line and a slanting line. Just join it like a V and just color it neatly and beautifully. Y is for fruits yellow. Color the fruits yellow. अब ये दोनों mango और banana है. Banana और mango दोनों ही yellow color के होते हैं. So you have to color both the fruits with the yellow color. Okay, this is your homework. Now let's start the new alphabet. This is the last alphabet of the English. This is a Z. पहले इसे Z कहा जाता था, but नहीं, we pronounce it as a Z. This is a big Z, capital Z, and this is a small Z. Z as a zero. Z as a zero. Z for zoo. Zoo होता है जहाँ पे बहुत सारे animals रहते हैं. Z as zebra and Z for zip. आपके बैग की zip होती है, जैकेट की zip होती है. Yes. Draw lines from the letter Z to the picture that begin with its sound. Z as zoo. Z for zigzag. Zigzag बनाते हैं हम color से. Z as zucchini. It's a vegetable. And Z for zip too. Zip मैम ने आपको बता दी. तो चलिए next exercise करते हैं. Z is for zebra. Z is for zip. Z is for zero. Wow, that's a trip. Wow, that's a trip. इसमें भी एक sleeping line, then a slanting line, then a sleeping line, and then a sleeping line. Okay, ये बन गई आपकी Z. Color it. Color the zero. Now you can use any color of your choice and make a zero colorful. Okay, so this is the last alphabet. Now what you have to do? Happy learning.